ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। उद्धव उवाच क्रियायोगं समाचक्ष्वा भगवाराधनं प्रभो। यस्त्वां ये यथार्चन्ति सात्वता सात्वतर्षभ। एतद्वदन्ति मुनयो मुहुर्निःश्रेयसं नृणाम्। नारदो भगवान् व्यास आचार्योऽङ्गिरसः सुतः। निःसृतं ते मुखाम्भोजाद् यदाह भगवानजः। पुत्रेभ्यो भृगुमुखेभ्यो देव्यै च भगवान् भवः। एतद् वै सर्ववर्णानामाश्रमाणां च सम्मता। श्रेयसामुत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानदा। एतत् कमलभद्राक्ष कर्मबन्धविमोचन। भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वरा। श्रीभगवानुवाच नायन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धवा। संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथा वदनुपूर्वशः। वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः। त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समर्चये। यदा स्वानिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः। यदा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे। अर्चायां स्थण्डिलेऽग्नौ वा सूर्ये वाप्सु हृदि द्विजे। द्रव्येण भक्तियुक्तोर्चे स्वगुरुं माममायया। पूर्वं स्नानं प्रकुर्वीता धौतदन्तोऽङ्गशुद्धये। उभयैरपि च स्नानं मन्त्रमृतग्रहणादिना। सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेन चोदितानि मे। पूजां तैः कल्पयेत् सम्यक् संकल्पः कर्म पावनी। शैली दारुमयी लौहि लेप्या लेख्या च सैकती। मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता। चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरा। उद्वासावाहनेन स्थिरायामुद्धवार्चने। अस्थिरायां विकल्पः स्यात् स्थण्डिले तु भवेद्वया।
तपनं त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमार्जना द्रव्ये प्रसिद्धैर्मद्याग प्रतिमादिस्वमायिनः भक्तस्य च यथा लब्धैर्हृदि भावेन चैव हि स्नानालङ्करणं प्रेष्ठामर्चायामेव तूद्धवा खण्डिले तत्त्वविन्यासवन्नावाज्यप्लुतं हविः सूर्ये चाभ्यर्हणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः श्रद्धयोपारितं प्रेष्ठं भक्तिना मम वार्यपि भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते गन्धो धूपासु मनसो दीपो नाद्यं च किं पुनः शुचि संहृत संभारा प्रागदर्भै कल्पितासनः आसीना प्रागुदगवार्चे दर्चायामथ सम्मुखः कृतन्यासा कृतन्यासा मदर्चां पाणिना मृजेत फलसम्प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत् तदभिरदेव यजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च प्रोक्षपात्राणि त्रीण्यदभिस्तैस्तैर्द्रव्यैश्च साधयेत् पाद्यार्घ्याचमनीयार्थं त्रीणि पात्राणि दैशिकः हृदाशीष्णाथ शिखया गायत्र्या चाभिमन्त्रये पिण्डे वायवग्निसंशुद्धे ऋतपदमस्थां परां मम अन्वीं जीवकलां धियायेन्नादान्ते सिद्धभाविता तयात्मभूतया पिण्डे व्याप्ति सम्पूज्य तन्मयः आवाह्यार्चादिषु स्थाप्य न्यस्ताङ्गं मां प्रपूजयेत् पाद्यपस्पर्शार्हणादीनुपचारान् प्रकल्पयेत् धर्मादिभिश्च नवभिः कल्पयित्वा सनं मम पद्ममष्टदलं तत्र कर्णिका केसरोज्ज्वला उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तु भयसिद्धये सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदासीषु धनुर्हलाल् मुसलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत् नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च महाबलं बलं चैव कुमुदं कुमुदेक्षणा
दुर्गां विनायकं व्यासं विश्वक्सेनं गुरुं सुरान् स्वी स्वी स्थाने त्वभिमुखान् पूजये प्रोक्षणादिभिः चन्दनो क्षीरकर्पूरा कुङ्कुमा गुरुवासितैः सलिलैस्नापयेन मन्त्रे नित्यदा विभविष्यति कर्णघरमानुवाकेन महापुरुषविद्यया पौरुषेणापि सूक्तेना सामभिराजनादिभिः वस्त्रोपवीताभरणा पत्रस्रग्गन्धलेपनैः अलङ्कुरवीत सप्रेमा मदभक्तो मां यथोचिता पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोक्षता धूपदीपोपहार्याणि दद्यान् मे श्रद्धयार्चकः गुडपायस सर्पिंषि सस्कुल्यापूपमोदकान् संयावदधिसूपाञ्च नैवेद्यं सति कल्पयेत् अभ्यङ्गोन्मर्दनादर्शादन्तधावाभिषेचना अन्याद्यगीतनृत्यादि पर्वणे स्युरुतान्वः विधिना विहिते कुण्डे मेखलागर्तवेदिभिः अग्निमादाय परिता समूहे पाणिनोदिता परिस्तीर्याध पर्युषे धन्वाधाय यथाविधि अग्निमाधाय परिता समूहे पाणिनोदिता परिस्तीर्याध पर्युक्षे धन्वाधाय यथाविधि प्रोक्षण्यासाद्य द्रव्याणि प्रोक्षाण्यग्नौ भावयेतमा तप्तजम्बोनदप्रख्य शङ्खचक्रगदाम्बुजैः लसच्चतुर्भुजं शान्तं पद्मकिञ्जल्कवाससा स्फुरद्किरीटकटका कटिसूत्रावराङ्गदा श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत कौस्तुभं वनमालिना ध्यायन्नभ्यर्च दारुणे अभिषाभिघृतानि च दास्याद्य भागा वागारौ दत्त्वा चाद्य प्लुतं हविः जुहुयान्मूलमन्त्रेण षोडशर चावधानतः धर्मादिभ्यो यथान्याय मन्त्रैः स्विष्टकृतं बुधः अभ्यर्च्याथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बलिं हरेत् मूलमन्त्रं जपेद ब्रह्म स्मरन् नारायणात्मका दत्त्वा च मनमुच्छेषं विश्वक्सेनाय कल्पये
मुखवासं सुरभिमत्ताम्बूलाद्यमथार्हयेत् उपगायन् गृणन् नृत्यन् कर्माण्यभिनयन् मम मदकथा श्रावयत् शृण्वन् मुहूर्तं क्षणिको भवेत् स्तवैरुच्चावचैस्तोत्तरै पौराणैः प्राकृतैरपि स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत् शिरोमत्पादयो कृत्वा बाहुभ्यां च परस्पर प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहणवात् इति शेषा मया दत्ता शिरस्याधाय सादरा उद्वासये चेदुद्वास्यां ज्योतिर्ज्योतिषि तत्पुनः अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत् सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्माहमवस्थितः एवं क्रिया योगपदै पुमान् वैदिकतान्त्रिकैः अर्चयन्नुभयतः सिद्धिं मत्वा विन्दत्यभीप्सिता मदर्चां सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेत् दृढा पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितानि पूजादीनां प्रवाहार्थं महापर्वस्वथान्वः क्षेत्रापणपुरग्रामान् दत्त्वा मत्साष्टितामियात् प्रतिष्ठया सार्वभौमं सदवना भुवनत्रया पूजादिना ब्रह्मलोकं तिभिर्मत्साम्यतामियात् मामेव नैरपेक्षेण भक्तियोगेन विन्दति भक्तियोगं च लभते एवं यः पूजयेत माम् यः स्वदत्तां परैर्दत्तां हरेतासुरविप्रयो वृत्तिं सजायते विडभोगवर्षाणामयुतायुता कर्तुश्च सारथेर्हेतोरनुमोदितुरिव च कर्मणां भागिनः प्रीत्या भूयो भूयसि तत्फला स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे सप्तविंशोऽध्यायः। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे सप्तविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणदाक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय।